जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, नेवर से डाई एटीट्यूड के एक नए एपिसोड के साथ और एक नए सोल्जर के साथ मैं मेजर डीपी सिंह आपके साथ रूबरू हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सोल्जर की जिसने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोरोना जैसी कंडीशन को ऑलरेडी फेस किया, इवन बिफोर द कोरोना और द कोविड हिट अस। Who is he and what did he do and how did he come out of such situation? We will speak all about that. But before that, let's have a look on his life in this short clip. Col Rakesh Krishnan, a fearless soldier who has faced some of the most demanding assignments in the Northeast insurgency, Jammu and Kashmir. लेकिन उनकी सबसे कड़ी चुनौती तब आई जब उन्हें सियाचन में खुद अपनी शरीर के खिलाफ ही लड़ना पड़ा। एक फिट, एक्टिव सोल्जर के लिए उनकी बीमारी एक बड़ा हादसा था, लेकिन वो हार नहीं माने। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद he exercised and he swam to pump up his lungs and he recovered from this severe respiratory illness. आज उनकी लंग्स की कैपेसिटी 70% है, लेकिन उनके जीने की कैपेसिटी पूरी 100% है। आफ्टर बीटिंग द इलनेस, उनके मिलिट्री का सफर जारी रहा और उन्होंने एलीट NSG ब्लैक कैट कमांडोज के टीम को लीड किया। कई रिकॉग्निशंस भी मिले। फौज छोड़ने के बाद कर्नल कृष्णन के पास एक कंपनी से ऑफर आया और वो अपनी फैमिली के साथ सब कुछ समेटकर हैदराबाद रिलोकेट हो गए, लेकिन कंपनी शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। कोविड का असर उनकी कंपनी कैटफिट पर भी हुआ और कर्नल कृष्णन को केरला में नई जॉब लेनी पड़ी। उस जॉब में वो अभी सेटल हुए ही थे कि उन्हें एक नए चैलेंजिंग असाइनमेंट का ऑफर आया। True to his personality, he took the offer, which again took him away from the comfort zone he had established. उनका मानना है कि लाइफ में अगर इग्निशन चला गया तो लाइफ में प्रोग्रेस बंद हो जाती है। बात सही है, चैलेंजेस इग्निशन होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी एक छोटी सी झलकी कर्नल राकेश कृष्णन की लाइफ के ऊपर। कर्नल राकेश कृष्णन, जय हिंद एंड वेलकम टू यू। Jai Hind, DP, and thank you for having me on the show. And it's always a pleasure talking to you. Sir, you have seen tremendous amount of action in your professional life, but we will take you directly to the incident which you suffered, the most troubled incident which you suffered in Siachen. Can you please throw a little light about that? I, being a third direct generation officer, तो शुरू से ये शौक था कि फौज में जाना है। फौज में इन्फेंट्री में गए, पहले स्पेशल फोर्सेस में गए, फिर इन्फेंट्री में थे। एंड ऑलवेज सियाचन फिगर्ड एज अ मेजर थिंग वेयर यू हैड टू गो। So when the unit got a chance to go, we were all very happy. And I went in the advance party and I took the unit there. And initially high altitude के एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं था। थोड़ी बहुत सर्दियों के टाइम में I used to get acute congestion and all, तो हमने सोचा वही नॉर्मल अपना कॉफ एंड कोल्ड वाला हिसाब होगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट ड्यूरिंग द समर मंथ्स इट वाज ऑलराइट, बट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इट बिकेम बैड। एंड अ टाइम केम वेयर आई वाज barely able to move. देन आई वाज evacuated to परतापुर, जो हमारा हॉस्पिटल है उधर। एंड देन दे स्टार्टेड, वी हैड एक्सीलेंट डॉक्टर्स एंड दे स्टार्टेड गिविंग मी लॉट ऑफ मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, ये वो सब। बोला भाई इधर आप ठीक नहीं होंगे, आपको भेजना पड़ेगा चंडीगढ़। और आपको पता ही है हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, हवाई जहाज आती है एंड बिकॉज ऑफ रेरिफाइड टेम्परेचर इट कैन नॉट टेक बैक टू मेनी पीपल फ्रॉम दैट प्लेस, इट टेक्स मिनिमम पीपल। I still remember that day the aircraft was going back and I was the single guy going back to that, and बाकी सब लोग इंतजार कर रहे थे एयरफील्ड पे। बड़ा बुरा लग रहा था। But I, being a medical casualty, I was given priority and I landed in चंडीगढ़। चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उधर भी डॉक्टर ने आते ही बोला, अच्छा कैसे, सिगरेट पीते हो? मैंने बोला कभी नहीं। अब ओट देख के उनको लगा कि भैया पक्का सिगरेट पीता है। Never smoked a day in my life. Dad was a passive, मतलब dad was a chain smoker, but I kept away from cigarette. Again they treated me there. They said no, we'll have to do further tests. You're not responding to treatment. Then they dispatched me to R&R Hospital, Delhi.
The test kept going on. Slowly, I kept improving. They ruled out tuberculosis, they ruled out cancer, they ruled out other things. They finally found out that I have a hypersensitive airways wala disorder, which later on came into being and it became asthma also. But at that time, they said your airways reacts, matlab it overreacts to cold air going in. And I was finding it very difficult to breathe, do normal functions, walking fast. The doctor said, Dekho bhai, you have survived and come from there. It's fine. But I cannot guarantee you how your rest of your life is going to be. He told me very clearly. He said, Daudna bhagna mushkil hoga. Because we were, हम military school वाले थे, तो बचपन से sports and games were part of life. तो मतलब डॉक्टर बोल रहा है भाई खेलना वेलना तो मुश्किल होगा. Over a period of time, I started recovering, became a low medical category, got posted. Then मुझे बोला कि आप रेस्ट करो. एक आध महीने छुट्टी लिया, and I still remember I was in Chandigarh. My son was born there, so my wife was there, so I joined them. And slowly I started walking. ये वो सब कुछ महीनों में थोड़ा और स्पीड बढ़ाया, ये वो सब. फिर अपग्रेड तो हुए नहीं, बट जब फाइनली आई लैंडेड अप इन अ यूनिट, वो होता है लो मेडिकल कैटेगरी को डाल देते हैं ना कोई और यूनिट में, और यूनिट वाले भी सोचते हैं अरे यार एक और एलएमसी आ रहा है. तो मुझे याद है डीपी वो पहली दिन जब मैं पीटी के लिए गया था, कई महीनों बाद है ये, मतलब 4-5 महीने हो गए थे. तो यूनिट के जवान भी देख रहे थे, अच्छा साहब दूसरे यूनिट से आ रखे, एलएमसी है, तो उनको दौड़ाते आज. And they took me on a long circuit, 5 kilometers. But what they didn't realize is that I used to practice regularly. चलना शुरू किया, फिर walking शुरू किया, फिर lot of exercises, swimming से किया, lot of diet control. And over a period of time, I did realize that I was not normal, but it was not something which was insurmountable. You won't believe it. After I recovered, I came back. I landed up in Bareilly. I met Arpan Dikshit, interacted, great friend, and we became close also. And he made a schedule, and I went into systematic training. And believe me, that has made a difference in my life. You have to go on. And a time came when I got an opportunity to go to NSG and command the energy unit. And we had a basic test and all, but I was fit enough to do everything. I had no issues at all. So something similar condition is, I believe, patients of COVID also undergo. The people who have vulnerable lungs like us and all, they have to be a little extra careful. But most important, you should not be scared. That fear should not be there. क्योंकि जब वो fear आता है, तो your bodily functions get affected, and it should not play on your mind. It should not stop you from doing everything. We are moving around, we are going everywhere, and हम हरकत कर रहे, काम कर रहे. But yes, precautions लेना, हाथ धोना, ये कार्रवाई करनी है. That's all. That's what's necessary, I feel. So let's now come to your civil life. After you hung your uniform, I believe you got an opportunity, a very lucrative opportunity, a dream type of a job, which was offered to you, and accepting that, you relocated bag and baggage to Hyderabad. What happened there? Can you please throw some light on that part? Just as I was leaving the forge, I got this excellent offer, dream offer, like you said, a German company taking over an Indian firm, manufacturing ballistic material, bulletproof jackets and all. And they said they needed someone like me, and they needed me to move to Hyderabad. I said, no, everything's working out fine. And okay, what else can I hope for? बस मतलब पूरी पैकिंग वैकिंग हो गई, हैदराबाद पहुंच गए, घर भी रेंट पे ले लिया. बोला कि भाई साहब कंपनी का क्या हो रहा है? बोला बस 1 महीने की बात है, कंपनी बस सेट हो रही है, ये है वो है. And the factory was there incidentally, but there was a takeover which was to happen, and money had to come in. You won't believe it. 1 month happened. It went on to 2 months, went on to 3 months. And finally, they said the company is not taking on. It's just not taking off. And I have moved to Hyderabad, and I have no connection in Hyderabad before this. Never stayed there. Just moved, but we liked Hyderabad. Family wale, wife, everyone started questioning, and which is very right. कि भैया सबको अप्रूव करके आप आ गए हो, नए जगह में आ गए हो, and नौकरी है नहीं. But you know, back of my mind, I always had it कि you have to prepare for plan B. ठीक है, कोई भी चीज आप लाइफ में करो, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी होना चाहिए. And you should remember that your plan C might become your plan A, and plan A might become plan C. वो सोच विचार में लचीलापन रखना बहुत जरूरी है. तो बैक ऑफ माई माइंड ये था मेरे माइंड में, ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा तो क्या करेंगे. तो वंस इट हैपेंड, यस, झटका जरूर लगा,
money was not coming in, pension had just started coming in, जो savings थे उसी पे कर रहे थे, घर में invest किया था, बच्चों को नए स्कूल में डाला, international स्कूल में डाला, ठीक है, so expenses were also there, but I realized that I have to change, I have to evolve, I have to adjust and adapt. We get stuck in a circle of comfort. हम लोग वही सोचते हैं कि भाई यही चीज है, यही करना है, इसके अलावा कर नहीं सकते. क्यों? मैं आईटी वाला बंदा हूं, मैं आईटी के अलावा और कुछ कैसे कर सकता हूं? तो इट इज वेरी इजी टू से कि प्लान ए प्लान बी बना लो, और प्लान ए अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जस्ट स्विच ओवर टू प्लान बी. बट अ पर्सन जिसने फौज में सारी जिंदगी निकाली है, वो बिजनेस की तरफ रुझान रखना इज अ टोटली ड्रास्टिक ऑपोजिट फेज ऑफ लाइफ. तो जो अडेप्टेबिलिटी है, या वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी जिसके कारण ये स्विच ओवर बिकेम इजी फॉर यू, और डिड यू फेस द चैलेंजेस फॉर द स्विच ओवर? यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट टू इवॉल्व. अगर आप सोच रहे हो कि आई एम सेट, मैं पहुंच गया हूं, आई हैव अराइव्ड, नो वन अराइव्स. Nothing is permanent other than change. You have to prepare for that change. And COVID में भी आप देखोगे, yes, it is easier said than done, but there is no other option, DP. और कोई तरीका ही नहीं है. आपको वो सोच रखनी पड़ेगी. आपकी सर्वाइवेबिलिटी डिपेंड करती है. तो जो कैटफिट कंपनी आपने शुरू करी, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, इसके ऊपर कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ? बिकॉज दैट वाज आल्सो मोर ऑफ अ आउटगोइंग टाइप ऑफ अ कंपनी. एब्सोल्युटली असर हुआ है. कोविड का कोई डाउट ही नहीं हुआ, बिकॉज वी वर इनटू ट्रेनिंग पीपल इन कॉलेज, ट्रेनिंग पीपल इन स्कूल्स, एंड वी वर आल्सो इनटू हाई एंड सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग. बहुत फर्क पड़ा है, बट वी इवॉल्व्ड. Yes, the money is not coming in as much as we would like it to come in, but however we evolved, we are doing lots of online training, lots of online classes, and luckily driven by my wife now, it's doing better. It was not doing so well जब मेरे नाम पे था. जब ट्रांसफर हो गया वाइफ के नाम पे, it's doing much better. Maybe lady luck, and my wife is anyway lucky. So people, you have time and again mentioned about that your friends, your near and dear ones suggested you to not to take that challenge, various types of challenges which you have taken in your life. और ये सिचुएशन कई ज्यादातर लोगों के साथ आती है कि जहां पर वो कुछ अगर करना चाहते हैं तो सजेशंस जो आसपास के लोगों के हैं वो उसको कई बार रोक देते हैं. तो वो क्या चीज है जिसको ध्यान में रख के ये लाइन क्रॉस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आप डिसाइड करते हो? डीपीसी, हमारे सोसाइटी में ना, बाय नेचर वी इंडियंस आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव. आप रात को दौड़ने जाएंगे, लोग बोलेंगे रात को क्यों जा रहा है यार. साइकिलिंग करने जाएगा, ट्रक वाले ने ठोक देना है तेरे को. स्विमिंग करने जाएगा, डूब जाएगा यार तू. ठीक है. So what happens is we are brought up in a very conservative society. Not only the girls or boys or whatever, generally. So when you step out of your comfort zone, and most importantly, when you fail, everyone looks down at you and everyone treats you like a foe. I still remember when the job did not work out, हैदराबाद में कई लोगों ने मुझे कॉल किया, बोला यार तेरे को बताया था ना यार, तूने क्यों फौज छोड़ा, बताया था तू क्यों हैदराबाद गया, बताया था उस भरोसा नहीं करना है. भाई कोशिश किया है, नहीं हुआ है, और कुछ देखेंगे. ठीक है. बट हमारी सोसाइटी में वी आर ऑलवेज लुकिंग हीरोज, सक्सेसफुल स्टोरी. वी डू नॉट रियलाइज फेलियर इज एज मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू स्पर यू ऑन. If you understand failure better, it teaches you things much better than victory. So failure, challenges और सक्सेस की क्या रिलेशन है आपके हिसाब से? देखो डीपी, I have always believed, and I have failed a lot of times. Many times where I have failed, I have not even mentioned it to you, and maybe I'll be too embarrassed to mention. But the thing is, I have taken it in my stride. कि चलो नहीं हुआ है, अगला टारगेट बनाओ, कोशिश करो. ठीक है. एंड आई हैव ऑलवेज रियलाइज इट इज वेरी, मतलब व्हाट शुड आई से, इट इग्नाइट्स योर माइंड एंड इट गिव्स यू अ ग्रेटर लेवल ऑफ एनर्जी व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन. दैट लोग मैसेज और स्टेटस ही चेक करते रहते, वो थोड़ा म्यूजिक सुनना, डांस करना, वो सब भूल गए. तो आई बिलीव आई गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम माय हॉबीज. When I am down, I come back, I listen to a lot of music.
I exercise. I love to listen to audiobooks. Whenever I'm down, I come and do this, talk to the family. But the hobbies give you a lot of energy. So you have to find something जिससे आपको वो एनर्जी मिलता है, वो सूत्र आपको ढूंढना है, वो चीज जिससे आप प्रेरित होकर आपको वो शक्ति मिलेगी ताकि आप रिचार्ज होकर वापस प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग जाए. Who inspires you? See, at different stages in life, different people have inspired me. My father inspired me during my childhood, and actually, I don't look for very big superheroes to look for inspiration. You look around you, you find a person who is doing his job well, and you learn a lot from him. What are the lessons which you will convey that you have drawn from Army and NSG? NSG in particular. See, the most important lesson, if I have to give just 2 words to people and to follow it in any sphere in life, is self-belief. Self-belief is such an important thing कि हो सकता है कि आपके आसपास वाले आप पे विश्वास करते हो जो आप कर रहे हो सकता है कि उनको इतना विश्वास ना हो, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास हो, you have that self-belief, you can do it, you must go on ahead. The last question to you, sir, what does change means to you? Change means growth, change means evolving, change means learning, most important thing. And change means interesting times, meeting interesting people, learning new things, new atmosphere. Change is very positive for me. I always look forward to change. Wonderful, sir. It was great interacting with a soldier, spirited soldier like you. There are a lot we have learned, especially that never say die attitude, which you have portrayed not only in your personal and a professional life, but you are still doing that. Our good wishes to all your future ventures. Thank you so much for being with us. Jai Hind. Thank you so much, DP, for having me on the show, and it was a pleasure talking to you. Jai Hind. तो ये थे कर्नल राकेश कृष्णन, जिन्होंने हमको बताया कि कैसे चैलेंजेस आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ और कैसे नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ, चाहे मेडिकल कंडीशन हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, जूझते रहना is the only option. You do not have any other option but to win in your life. अगले हफ्ते एक नए सोल्जर, एक नई स्टोरी जिसने नेवर से डाई एटीट्यूड को शोकेस किया, उसके साथ मैं मेजर डीपी सिंह आपके साथ रूबरू होऊंगा. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद, भारत माता की जय.